Good morning, everyone. This is the next lecture of Unit 4, in which we have to discuss some storage organization schemes in compilation process. तो इस इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस सम स्टोरेज एलोकेशन स्ट्रेटजीज. ये कभी कभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि राइट डाउन स्टैटिक एलोकेशन स्ट्रेटजीज. तो उसको हम डिटेल में समझते हैं. तो दिस इज अ लेक्चर नंबर 5. The different storage allocation strategies are first one is a static allocation, lays out storage for all data object at compile time. जो भी हम कंपाइल टाइम पे डेटा यूज़ कर रहे हैं अपने कोड को कंपाइल कर ड्यूरिंग द कंपाइलेशन प्रोसेस, विच डेटा यूज फॉर कंपाइलेशन प्रोसेस इज नोन एज स्टैटिक एलोकेशन. एंड स्टैक दूसरा है स्टैक एलोकेशन. दोनों में डिफरेंस है, समझिए इसको. मैनेज द रन टाइम स्टोरेज एज आ स्टैक. अगर रन टाइम स्टोरेज मतलब हम जो डायनेमिक एलोकेशन कर रहे हैं, अभी मैंने एक टर्म डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर में, डायनेमिक एलोकेशन और डायनेमिक डी एलोकेशन, है ना. तो उस चीज़ से रिलेटेड है स्टैक एलोकेशन. इसके लिए हम स्टैक यूज़ करते हैं. और एक हीप एलोकेशन मैंने आपको बताया, allocates and deallocates storage as nested at runtime from a data area known as हीप. तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था जब मैं एक्टिवेशन रिकॉर्ड डिस्कस कर रहा था. तो हीप जो होता है, हीप को हम डायनेमिक टाइम मतलब रन टाइम पे हम यूज़ करते हैं अपने कंपाइलेशन प्रोसेस में. ठीक है, तो जिसमें हमें डी एलोकेशन करना है, एलोकेशन करना है. और अगर वही बात मैं स्टैक की करूँ तो स्टैक को मैं सिंपल एक बेसिक उस समय यूज़ करता हूँ जब मुझे रन टाइम या डायनेमिक बाइंडिंग नहीं करनी रहती है. अब मैं बात करता हूँ स्टैटिक एलोकेशन की. इन स्टैटिक एलोकेशन नेम्स आर बाउंड टू स्टोरेज एज द प्रोग्राम इज कंपाइल्ड, सो देयर इज़ नो नीड फॉर रन टाइम सपोर्ट पैकेज. Since the binding do not change at runtime, every time a procedure is activated, its name are bound to the same storage location. Therefore, values of local names are returned across activation of a procedure. है ना. तो स्टैटिक एलोकेशन आपको समझ में आया कि हम जो भी स्टोरेज दे रहे हैं ड्यूरिंग अ कंपाइलेशन प्रोसेस, वो हम अब कंपाइलेशन प्रोसेस के उस समय दे रहे हैं. वो काम एग्जीक्यूशन के टाइम पे नहीं दे रहे हैं. ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन वो काम हम नहीं कर रहे हैं, या ड्यूरिंग द रन टाइम वाइंडिंग रन टाइम प्रोसेस के समय पे नहीं कर रहे हैं. तो दैट इज़ व्हेन कंट्रोल रिटर्न अप टू अ प्रोसीजर, द वैल्यूज ऑफ द लोकल are the same as they were when control left and last time. From the type of name, the compiler decide the amount of storage for the name and decide where the activation record go. At compile time, we can fill the addresses at which the target code can find the data is operate on. अब मैंने आपको एक नई इसमें टर्म सुनने को आ रही है, एक्टिवेशन. देखो, देयर आर 7 टाइप्स ऑफ फील्ड इन स्टोरेज इन एक्टिवेशन रिकॉर्ड, जिसमें लोकल एक्सेसिंग के बारे में हम डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन रखेंगे, है ना. टेम्परेरीज के बारे में इंफॉर्मेशन रखेंगे, है ना. और भी मैंने आपको बताया था उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन रखते हैं. ठीक है, तो वो आपका एक्टिवेशन रिकॉर्ड. तो ये सिंपल सा आपका स्टैटिक एलोकेशन हो गया. अगर मैं बात करूँ स्टैक एलोकेशन की, ऑल कंपाइलर फॉर लैंग्वेज दैट यूज प्रोसीजर functions or methods as unit of user defined actions manage at least parts of their runtime memory as stack. Each time a procedure is called, space for its local variable is pushed onto stack, and when the procedure terminates, दैट स्पेस इज पॉप्ड ऑफ द स्पेस. मतलब जब भी प्रोसीजर वो आएगा उसको हम यूज़ करेंगे तो हम उसके लिए स्टैक प्रोवाइड या स्पेस प्रोवाइड करवाएंगे. और जब भी उस फंक्शन का या किसी वेरिएबल का यूज़ हम कर चुके होंगे तो उसको हम पॉप्ड ऑफ कर देंगे, पॉप्ड आउट कर देंगे, उसको स्टैक से बाहर निकाल देंगे. अब मैं बात करूँ स्टैक एलोकेशन ऑफ स्पेस, ये चीज़ों की कॉलिंग सीक्वेंस की अगर मैं बात करूँ, प्रोसीजर्स कॉल्ड आर इम्प्लीमेंटेड इन वॉट is called as calling sequence, which consists of a code that allocates an activation record on the stack and enters information into its field. Return sequence is similar to code to restore the state of machine, so the calling procedure can continue its execution after the call. The code in calling sequence is often divided between the calling procedure caller and the procedure it call callee. आपको
प्रोसीजर कॉल्स के बारे में पता होगा, प्रोसीजर कॉलर जिसको कॉलर कहते हैं, और प्रोसीजर जो इसको कॉल करता है जिस प्रोसीजर को, वो कॉल ही होता है, ठीक है। व्हेन डिजाइनिंग कॉलिंग सीक्वेंस एंड द लेआउट ऑफ एक्टिवेशन रिकॉर्ड द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स आर हेल्पफुल, है ना। Values communicated between caller and callees are generally placed at the beginning of the callee's activation record, so are they are as close as possible to the caller's activation record link, and the machine status field fixed length items are generally placed in the middle. Such in the control link, the accesses items whose size may not be known early enough are placed at the end of activation record. The most common example of dynamically sized array where the values of one of the callees parameter determine the length of the array. To the end of fixed length in the activation record, the fixed length data can be accessed by the fixed offset known as the intermediate code generator relative to the top of the stack pointer. We must locate to top of the stack pointer judiciously. A common approach is to have it point the calling sequence and its division between caller and callee are as follow. The caller evaluate the actual parameter. The caller store a return addresses and old values of top of into callee activation record. The caller then increment the top of the respective position. The callee saves the register value and other status information. The callee initializes its local data and begin execution as suitable corresponding return sequences. The callee places the uh, return value next to the parameter using the information in the machine status field. The callee restores top of SP and other register, then branches to the return address that is caller placed in the status field. Although top SP has been decremented, the caller known where the return value is relative to the current value of the top. The caller therefore may use the that value variable length on the stack. The runtime memory management system must deals frequency with the allocation of space for objects the size of which are known at the compile time but which are local to a procedure and thus may be allocated on the stack. The reason to prefer placing object into the stack is that we avoid the expense of the garbage collecting their space. Some same scheme work as object of any type if they are local to the procedure call and have a size that depend upon the parameter on the call. Heap allocation की अगर मैं बात करूँ, stack allocation strategy cannot be used if either of the following is possible. The values of no local name must be retained when an activation record ends. A called activation outlives the caller. Heap allocation parcels out piece of contiguous storage as needed for activation record or other object pieces may be deallocated in any order. So over the time the heap will consist of alternate area that are free in use. अब मैं इस डायग्राम की अगर बात करूँ, ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था। पोजीशन इन द एक्टिवेशन ट्री, अगर सिंपल सा एक पोजीशन देखें तो इट्स फॉर्म अ ट्री स्ट्रक्चर। और अगर एक्टिवेशन रिकॉर्ड में अगर बात करूँ तो देयर आर सम कंट्रोल लिंक्स है ना विच वी आर स्टोरिंग इन एक्टिवेशन रिकॉर्ड। एक्टिवेशन रिकॉर्ड में मैंने आपको बताया देयर आर 7 टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन जो मैंने एक्टिवेशन रिकॉर्ड में फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। रिमार्क है ना, तो this is basically the record for an activation of procedure is retained when the activation end. Therefore the record for the new activation Q19 cannot follow that for a physically it is retained. Activation record for R is deallocated. There will be a free space in the heap between activation record for S and Q. Thank you.